Hello students, good morning. Hope you all are well. Student, in 10th class, chapter number 3 we discussed. In this chapter, exercise number 3.7, optional exercise, last exercise of this chapter. Some students having problem in question number 7. So today we will discuss question number 7. Okay, in which part you having the problem. See, question number 7. First part is solve the following pair of linear equation by any algebraic method. That is, given equation is px plus qy equal to p minus q, and second equation is ax minus py equal to p plus q. That is qx minus py equal to p plus q. Here is given two equations, but these equations are not in standard form. So firstly we convert given equations in standard form. Standard form, I write this one standard form कैसी थी आपके पास? That is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and second a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So firstly convert the given equations in this standard form of pair of linear equation in two variable. Then after we solve this equation by any algebraic method. Okay. So see this one. Firstly, to convert this one equation in standard form, we transpose p minus q to that side. Then this equation becomes px plus qy minus p minus q equal to 0. This one equation number 1. Okay. And second equation same, we convert into standard form. Then this equation becomes, that is qx minus py minus p plus q equal to 0. Equation number 2. Now we solve these two equations by any algebraic method. Okay. In this equation, if we apply cross multiplication method, then it's very easy for solve this. See how to apply this one cross multiplication method. So solve by this one is cross multiplication method. So cross multiplication method is, firstly arrange the given variable like that. That is both of the equation in x and y variable. So we arrange like that. Firstly x upon equal to y upon equal to 1 upon. Okay. अपन डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 में हाउ टू सॉल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. So firstly arrange, here is the given variable in both of the equation is x and y. Okay, so we arrange both of the equation like that. That is x upon equal to y upon equal to 1 upon. जिनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में नहीं आया वो एक बार वापस यहाँ ढंग से देख सकता है. कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का स्टार्टिंग क्या है? फर्स्टली वी अरेंज द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो दिस वन आर द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं वो देखिए दोनों इक्वेशन. That is a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. In both of the equation a1, b1 and c1, that means a1x plus b1y plus c1 equals to 0. That means both three terms either in left hand side or either in right hand side. या तो ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए या ये तीनों क्या होनी चाहिए? राइट हैंड साइड होनी चाहिए. इन सेकंड इक्वेशन से a2x plus b2y plus c2 equals to 0. किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है. और राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है. a1x आपका सेंटर में हो सकता है, c1 पहले हो सकता है, b1y लास्ट में हो सकता है. ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है. बट ये तीनों या तो राइट हैंड साइड में होना चाहिए थ्री टर्म्स, या फिर क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. ओके. नाउ देन आफ्टर अरेंज लाइक दैट दिस वन. जो वेरिएबल आपको गिवन हो उसको x अपॉन
छोड़ दें नीचे ब्लैंक, इक्वल टू y अपॉन नीचे ब्लैंक इक्वल टू 1 अपॉन डाउन साइड ब्लैंक. देन आफ्टर वी अरेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस. सो आप x की बात कर रहे हैं तो x को हाइड कर ले. x के अगर आप डाउन साइड लिखने जा रहे हैं कोफिशिएंट्स तो आप x को हाइड कर लें. देन राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म, दैट इज y coefficient here is q and minus p. Okay, then after write the constant term, that is minus p minus q, then the coefficient with sign, that is minus p plus q. Okay, then after y के बारे में बात करें तो y को हाइड कर ले. Then right after y क्या आ रहा है, that is constant term, that is c1 c2 minus p minus q and minus p plus q, this one c1 and c2. Okay, then after that this one coefficient of a1 a2, that is p and q. Then after downside of 1, this one hide this one constant, then remaining is p and q and minus p. Okay, यहाँ पर समझ में आया आप लोगों को. देन आफ्टर मल्टीप्लाई क्या किया है अभी इस स्टेप में, वापस देख लीजिए एक बार. x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, अरेंज फर्स्टली लाइक दैट. देन आफ्टर अरेंज द कोफिशिएंट्स डाउन साइड ऑफ x y एंड कांस्टेंट. हियर इज द कोफिशिएंट ऑफ x. जब आप x की बात कर रहे हैं तो y और कांस्टेंट टर्म आएगा, दैट इज b1 b2 c1 c2. जब आप y की बात कर रहे हैं तो आपके पास y के बाद कौन आता है, c1 c2 देन a1 a2, क्योंकि ये तो आपने हाइड कर दिया था. इसके बाद आपके पास c1 c2 देन a1 a2. ओके, देन आफ्टर इक्वल टू 1 अपॉन 1 यहां कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बाद सीक्वेंस में कौन आएगा, दैट इज a1 a2 b1 b2. ओके, अब एक चीज आप यहां पर देखें, ये दोनों जो पास वाले दोनों टर्म जो x और y है, इनके जो पास वाले जो कॉलम्स हैं वो सेम है. ये दोनों देखिए सेम है बिल्कुल एज इट इज. ओके, सिमिलरली देखिए ये दोनों कॉलम भी सेम है, pq and see this one last one, p minus q minus p or q minus p, both are same. Okay, then after multiply in cross multiplication method, that means go in cross then multiply, that is firstly go from right to left. आप किसी को गुस्सा आता तो किस हैंड को उठाते सबसे पहले, राइट. तो सबसे पहले किधर जाना है, राइट टू लेफ्ट. सबसे पहले कौन सा हाथ जाता है, राइट ना, राइट टू लेफ्ट. तो गोइंग फर्स्टली राइट टू लेफ्ट, दैट इज x अपॉन मल्टीप्लाई इन क्रॉस, दैट इज q मल्टीप्लाई बाय p माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस q मल्टीप्लाई बाय दिस, देन p प्लस q, देन माइनस माइनस प्लस. फर्स्टली वी गो थ्रू इन राइट टू लेफ्ट, देन आफ्टर वी गो थ्रू इन लेफ्ट टू राइट विथ नेगेटिव साइन. एक नेगेटिव साइन और लेना पड़ेगा आपको, ये नेगेटिव साइन तो है ही इन दोनों कोएफिशिएंट्स के. वन मोर नेगेटिव साइन इज बोथ. व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय थ्री नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, देन कौन सा साइन आएगा, माइनस. गॉट इट. देन p मल्टीप्लाई बाय दिस वन, p मल्टीप्लाई बाय p माइनस q इक्वल टू, दैट इज y अपॉन मल्टीप्लाई दिस वन टू दैट साइड, दैट इज माइनस q मल्टीप्लाई बाय p माइनस q. ओके, firstly from right to left, then after left to right with negative sign. So minus minus plus, that is p multiplied by p plus q. Okay, equal to 1 upon, then multiply similarly from right to left, that is plus minus minus p multiplied by p square, then multiply from left to right with negative sign, that is q multiplied by q minus q square. Got it, students? Then after solve this one for more, that is x upon. Now solve this one, that is q multiplied by inner side, that is minus pq, then minus q multiplied by plus q, that is minus q square, minus p multiplied by this bracket, that is minus p square, minus minus
plus pq. Okay, now minus pq2 plus pq cancel, equal to, that is y upon, that is minus q multiplied by p minus pq minus minus plus q square plus p multiplied by plus p, that is plus p square plus plus, that is plus pq. Okay, equal to, the remaining is 1 upon, now minus sign is common from both of them, that is minus p square plus q square. Got it students? वापस रिपीट करते हैं यहाँ तक. फर्स्टली गिवन इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहले जो इक्वेशंस आपको गिवन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म वी नो दैट a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. That means after standard form equation number 1 and 2 solve by cross multiplication method. In this method we firstly arrange the variable given. जिस equation जिस variable में होगी उसको ऐसे arrange करेंगे. That is x upon equal to y upon equal to 1 upon. Then after the coefficient of, when we discuss of the x, तो x को आप hide करेंगे. तो remaining coefficients कौन कौन से बच गए? b1 b2 c1 c2. तो b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y की बात करेंगे तो y को हाइड कर लीजिए. देन कोएफिशिएंट कौन कौन से बच के सीक्वेंस में चलना है. y के बाद कौन आ रहा है? c1 c2 a1 a2. तो c1 c2 a1 a2. देन आफ्टर आप कांस्टेंट की बात करेंगे 1 अपॉन, तो 1 अपॉन, देन हाइड दिस वन. देन आफ्टर a1 a2 b1 b2. ओके, देन मल्टीप्लाई cross multiplication method. This one is which method? Cross multiplication method. So go through in cross then multiply, cross then multiply. So cross कैसे start करना? From right to left, from right to left, start from right to left, that is right to left then left to right. Got it? Right to left. सबसे पहले ध्यान ये रखना है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है right to left. ओके, 99% लोग जो होते हैं इंडिया में कैसे होता है या पूरे वर्ल्ड में राइट हैंड होते हैं. तो इट इज 99. आपको ये ध्यान रखना है कि गो थ्रू इन फर्स्टली राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट विद नेगेटिव साइन. सो राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय राइट टू लेफ्ट, दैट इज q मल्टीप्लाई बाय दिस, और व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट टू राइट दैट इज विद नेगेटिव साइन. ओके, सो सॉल्व दिस वन. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देन ओपन द ब्रैकेट, देन टेक द कैंसिलेशन. हियर इज आल्सो कैंसिल आउट minus pq2 plus pq. Okay, so students, we rewrite the last step again after cancellation. Take the common from both minus p square and minus q square, minus sign outside and remaining in the bracket, that is p square plus q square equal to y upon p square plus q square, both are positive here, and equal to 1 upon, minus sign is common in the last step, then remaining is minus p square plus q square. Then after इसको solve कैसे करते थे अपन? फर्स्ट टाइम इसके साथ इसको लेंगे, सेकंड टाइम इसके साथ इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही कांस्टेंट है. यहाँ पर आपके पास अननोन वेरिएबल जो x और y है, तो x को आपको एक बार इसके साथ लेना है थर्ड के साथ में, और इसको y को इसके साथ लेना है थर्ड के साथ में. दैट इज सेकंड, टेक विद द थर्ड. Now see, when we take this one first, x upon minus p square plus q square with the third term. Okay, so that is x upon minus p square plus q square equal to with 1 upon minus p square plus q square, bracket close. Now multiply that side with the cross multiplication, that is x equal to, when this one term minus bracket p square plus q square, bracket close, multiply that side, this one term, that is minus p square plus q square divided by minus p square plus q square. Now this one term to this one term cancel out, then remaining is, that is, so the answer of x is x equal to 1. Okay, similarly we take this one second with this one constant. Okay, for finding the value of y, that is y upon p square plus q square is equal to minus 1 upon
p square plus q square. So multiply and cross this one. Okay, that is we get y equal to, by cross multiplication method, this one p square plus q square multiply that side by cross multiply, that is p square plus q square multiply by 1, we get p square plus q square divided by minus p square plus q square as it is. This one p square plus q square to p square plus q square cancel out. Then remaining is y equal to minus 1. Hence, student, value of x equal to 1 and y equal to minus 1. Got it? It's very easy. Now see the next part of this question. Now students, see the second part of question number 7. In this part, the given equations are ax plus by equal to c, and second equation bx plus ay equal to 1 plus c. So firstly we convert this one equation, both of the equation in standard form. So this one equation c, how to convert in standard form, transpose c to that side, that is this equation becomes ax plus by minus c equal to 0. Okay, and this one equation number 1. In second equation it is, that is bx plus ay, when we transpose 1 plus c to that side, left hand side, that becomes minus 1 plus c. The sign is changed, that is become minus 1 plus c, equation number 2. Okay, then after solve this one, student, by cross multiplication method. We apply this one same by cross multiplication method. So in this method we arrange, solve by, this one is cross multiplication method. So cross multiplication method we apply in this. So we arrange the given variable like that, that is x upon equal to y upon equal to 1 upon. Okay, so x upon, that means hide this one, that is x variable, write down this one coefficient, that is b and a, then minus c and minus 1 plus c. ओके, विद साइन आपको लेने कोएफिशिएंट, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. देन आफ्टर y हाइड by this one, then minus c minus 1 plus c, then a1 a2, that is a and b. Okay, then after in constant term hide this one, write down the coefficient of x, that is a and b and b and a. Okay, now multiplying cross, that is x upon, multiplying cross this one like that, that is b multiplied by this, that is minus b multiplied by 1 plus c, then minus minus plus, when we go that side left to right, then with negative sign, then minus minus plus, that is plus ac, equal to, multiplying right to left, that is y upon minus bc, then minus minus plus, that is plus a multiplied by 1 plus c, equal to, that is 1 upon, multiplied by a to a, that is a square, and b to b, that is minus b square. Okay, then after solve this one, students, open the bracket and solve further this one, that is x upon b multiplied by this one, that is minus b plus minus b multiplied by c, that is minus bc and plus ac. Okay, equal to, that is y upon this one minus bc plus a multiplied by this one a plus ac. Okay, then equal to this one 1 upon a square minus b square. Okay, students, we firstly arrange this one like that in cross multiplication in standard form. Then after
we multiply, arrange in the cross multiplication method, then after multiplying cross, then we get this. Okay, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Now see further solution of this. Now students, we take, for solving further this one steps, we take one by one, that is x upon this we take with the constant term, and the y upon this we take with the constant term. So firstly we take that is x upon minus b minus bc plus ac is equal to, with this, that is 1 upon a square minus b square. So for further solve this one, we multiply this one term with the 1 by cross multiplication, that is x equal to, when we multiply this one term with 1, we get as it is this term. After that we take the c is common from both minus bc and plus ac, then we get that is c is common, then remaining is a minus b and minus b as it is, divided by a square minus b square. According to the NCERT solution sheet, okay, this one you multiply like that, otherwise you left, आप ऐसे भी उसको छोड़ सकते हैं. ओके, ये जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्म में लाके उसे यहाँ पर लीव करें, आप ऐसे भी उसे छोड़ सकते हैं, वो आंसर राइट होगा. बट अकॉर्डिंग टू द NCERT शीट, दिस वन सॉल्यूशन C, we take common from both minus BC and plus AC. C is common, then remaining is A and minus B, then minus B as it is. Okay, first we multiply cross, that is minus B minus BC plus AC multiplied by 1, we get as it is this one term. Then after we take the common from minus BC and plus AC, that is C is common, then remaining is A minus B as it is. Okay, similarly this one is the value of x. Similarly for next, for value of y, we take second one with the third one, we get that is y upon, that is minus bc plus a plus ac is equal to, that is 1 upon a square minus b square. Okay, then after similarly multiply and cross that side, that is y equal to, when we multiply this one we get as it is this term, then we take c is common from both of the term, that is minus bc and plus ac. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? c, that is c is common, then remaining is a minus b and plus a as it is, divided by a square minus b square. Okay, so this one is the solution of y. So hence we get the two solutions, that is value of x is c multiplied by a minus b divided by a square minus b square, and y equals to, that is c multiplied with a minus b plus a divided by a square minus b square. अब स्टूडेंट इस फॉर्म में क्यों इसे अरेंज किया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये टर्म सेम है दोनों में, c मल्टीप्लाई बाय a माइनस b एंड c मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, दैट्स व्हाई एनसीईआरटी आंसर शीट में ये इस फॉर्म में अरेंज करके दे रखा है. गॉट इट? थैंक यू.